Good afternoon to one and all present here. This is Sachin Kalita. Once again, I am here. So today we are going to discuss chapter mensuration from class 8. So here we have some of the figures. আজি আমি যোনটো চেপ্টাৰ সলভ কৰিব গৈ আছোঁ মিনছ ইন্ট্ৰডাকশ্যন যোনটো চেপ্টাৰৰ ওপৰত কৰি আছোঁ সেইটো চেপ্টাৰটো হৈছে মেনচুৰেশ্যন. Here you can see it's a square, rectangle, circle, triangle, parallelogram and we have a quadrilateral. ठीक है. सो आज हम इस क्लास पे डिस्कस करने वाले हैं किस फिगर का एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है. So many students are get confused regarding the area and the perimeter. So we are just going to discuss about all these topics. So let's see. So here you can see that it's a square, right? It's a square and we know that all the sides of the squares are equal with each other. All the sides of square are equal with each other. So as we all know that it's a square. Okay. So area of the square will be, see when it comes to the area it will be side, ये एक side है, ये भी एक side है, right? So side और side को जब हम लोग multiply करता है it will be an area of the square. Area टू है ना कि उलाय जाए हमारे का square और so square का area निकालने के लिए we just have to multiply side into side. Side into side it will be a side square. Side square. Okay. Now when it comes to the perimeter, perimeter क्या है? Perimeter, see remember one thing. Perimeter it's a boundary. पेरीमीटर मतलब ये जो काला लाइन जो ये बाउंड्री दिख रहा है ना हर एक चीज में वो है पेरीमीटर. ठीक है. पेरीमीटर और एरिया में कंफ्यूज मत होइए. उस पेरीमीटर का अंदर में जितना भी एरिया है दिस इज द एरिया. वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम जो भी है व्हाटएवर इट मे बी लाइक. ओके. सो पेरीमीटर में क्या करना है? पेरीमीटर मींस लाइक इट्स अ बाउंड्री एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू. सो যদি আমি চাওঁ ইয়াতে সাইডটো আপোনালোকে যদি চাই all the sides are equal with each other, right? So याते जो 4 हो याते 4 हो याते 4 हो याते. So आप लोग या तो ऐसे लिख सकते हो कि 4 + 4 + 4 + 4 या तो ये लिख सकते हो या तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्या 4 into साइड लिख सकता है. ये 4 बार लिखने से अच्छा 2 वर्ड में हम लोग खत्म करता है इसको. 4 into साइड मीन्स क्या 4 into 4 साइड है ना एक साइड का जितना है into 4 कर दो. বুঝি পাইছা তোমালোকে এটা সাইড যিমান আছে আমি জানো যে এটু যদি 4 হয় ইনটু 4 কৰি দিয়া 4 4 16. সো আমি 4 into 4 into 4 এনেকে কৰাতকে আমি ডাইরেক্টলি উই ক্যান রাইট 4 into সাইড ইট উইল বি দা perimeter of a square. Next we have it's a rectangle as we all know that. ये क्या है? It's a rectangle. रेक्टेंगल में जो बड़ा वाला लेंथ है उसको हम लोग लेंथ बोलेंगे एंड एज कंपेयर टू दैट लेंथ जो छोटा वाला लेंथ है उसे हम ब्रेथ के नाम से जानेंगे और वी कैन से द वाइड. Okay, width, sorry, not wide, it's a width. B, L मैं शॉर्ट फॉर्मेट लिखी और ये तो B मैं शॉर्ट फॉर्मेट लिखी थी. अपना लोग ये तो बुझे लगो. एरिया क्या करना है? एरिया एज आई हैड टोल्ड यू जो अंदर का वाला है जहाँ पे हम रेड मार्कर से मैंने जहाँ पे लिखा है रेक्टेंगल. सो व्हेन इट कम्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी सिंपली हैव टू मल्टीप्लाई L into B. ठीक है. सिंपली हम लोग को क्या करना है ये लेंथ और ये जो ब्रेथ है उसको मल्टीप्लाई कर देना है अंदर का एरिया हम लोग को निकल जाएगा. ठीक है. सो L into B वी कैन राइट. अब पेरीमीटर देखो. पेरीमीटर मैंने बोला है अभी कि पेरीमीटर मतलब क्या है जो बाहर का जो बाउंड्री है. पेरीमीटर इट्स लाइक बाउंड्री जो काला वाला जो वो है सर्कल का जो ये काला वाला बाउंड्री है बाहिर जो आउटलाइन है द बाउंड्री लाइन विल बी द पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर वही निकालना है. ठीक है. तो पेरीमीटर है यहाँ पे 2 लेंथ है हमारे पास. देखो ये अगर लेंथ है दिस वन विल बी इक्वल टू दैट वन. ओके. एंड दिस ब्रेथ विल बी इक्वल टू दिस वन. isn't it? So we can write 2 into L plus B. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 लेंथ भी है 2 ब्रेथ भी है. सो मैंने इसलिए क्या लिख दिया 2 into L plus B. ठीक है. एक ही नहीं बुझी पाइसा सब है एक ही नहीं बुझी पाइसा. ओके. नेक्स्ट वी हैव द एरिया ऑफ द सर्कल. सी एरिया ऑफ द सर्कल व्हेन इट कम्स टू द एरिया ऑफ सर्कल याते मैं सर्कमफेरेंस क्यों लिखिसु कारण যিকোনো বস্তু कोई भी एक फिगर में लाइन सेगमेंट से जो बना हुआ होता है उसको हम लोग पेरीमीटर के नाम से जानते हैं. और सर्कल में हम लोग सर्कमफेरेंस देखो सर्कल नाम से ही पता चल रहा है ना सर्कल वाला जो है सर्कमफेरेंस मतलब क्या इसका भी वही बाउंड्री है. इसको निकालना होने से हम लोग को सर्कमफेरेंस के नाम से जानेगा. अभी आप लोग में से कुछ कुछ होता है सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक यू नो सर इसको पेरीमीटर के नाम से हम लोग क्योंकि बिकॉज द सर्कल इज नॉट मेड अप ऑफ फ्रॉम द लाइन सेगमेंट्स. द फिगर विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स वी कॉल इट पेरीमीटर. एंड व्हेन इट कम्स टू द सर्कल सर्कमफेरेंस को हम लोग इसलिए सर्कमफेरेंस के नाम से जानते हैं सर्कल को. ठीक है. सो एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एज वी ऑल नो दैट पाई इंटू आर इंटू ये दिस वन विल बी द रेडियस. सभी को पता है ये तो हमारे रेडियस হয় और पाई पायर वैल्यू तो যদি और এবাৰ কৈ দিছো মই পাই का वैल्यू
सी पाई का वैल्यू या तो 22/7 होगा. इफ it was not mentioned in the question, then you can directly write the formula of pi is equals to 22/7. अगर पाई का वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो पाई इज इक्वल्स टू 22/7. आरो जो क्वेश्चन जो दिया আছে পাইৰ ভ্যালুটো দিয়া থাকিব ইজ ইকুৱেল টু 3.14 হয়নে. ये দুটাৰ ভিতৰত কোনবা এটা পাইৰ ভ্যালুটো আমাক দিয়া হ'ব. ঠিক আছে. তো সার্কামফারেন্স কি হৈ গল. সার্কামফারেন্স মানে यहाँ से लेकर এই গোটেই লৈ পিনে আকৌ ইয়াতে ঘূৰি আহাটোকে আমি কি বুলি কওঁ লাইক এ সার্কামফারেন্স. ওকে. সো সার্কামফারেন্সৰ ফৰ্মুলা হৈ যাব 2πr². ঠিক আছে. এৰিয়া আমি বুজি পালো ভিতৰ এৰিয়াটো πr². সার্কামফারেন্স যেতিয়া ওলাব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা যোনটো কাউন্ট এই বাউন্ডাৰী লাইনটো 2 into pi into r². 2πr² will be the circumference of a circle. Next we will have a triangle. ट्रायंगल में देखो अगर ये चीज देखा जाए सो दिस विल बी ए बेस ना. ये तो तलत আছে আমি जो থিয় হৈ আছো আমার এটা তলৰটো মাটিটো আমি কি বুলি কওঁ बेस বুলি কওঁ. उसको हम लोग बेस के नाम से जानते हैं. ठीक है. इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे बेस. और ये बेस पे जब ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री ये जो ड्रॉ होगा इट विल बी एन हाइट. इसको क्या नाम से जाना जाता है हाइट. सो एरिया क्या हो जाएगा ट्रायंगल का इट विल बी ए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ट्रायंगल का जब एरिया निकालना होता है आप लोग क्या फॉर्मूला यूज करता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बिकॉज हियर वी हैव इट्स अ परपेंडिकुलर ड्रॉ टू द बेस विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री राइट. वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ है वो 90 डिग्री है. कहां पे हो रहा है वो लाइन इन द बेस. सो दैट्स व्हाई वी विल राइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. नाउ व्हेन इट कम्स टू द पेरीमीटर देखो triangle में it's not like equilateral triangle. There are scalene triangle, isosceles triangle, so many triangles are there. Right angle triangle, so they have a different shapes. They have a different sides. ठीक है. अलग अलग साइड हो सकता है या तो 3, 4, 5 ले लो कुछ भी अलग अलग. So we can directly write the sum of all the sides is equals to the perimeter of a triangle. Okay, perimeter of a triangle we can simply write sum of all the sides. Sum of all the sides you can write because as we know that we have so many triangles, we have different kinds of triangles are there. So to find out the perimeter of any triangle, we just have to sum all the sides. We will get the perimeter of a particular triangle. Okay. Anyways, next we will have a parallelogram. As you all can see, both the sides are parallel with each other, right? আমি এটু কি বলি কম parallelogram. Parallelogram. अब ये पैरेललोग्राम में अगर मैं इसको बेस मानूं, ठीक है, अगर मैं इसको बेस मानूं तो यहां से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा इट विल बी एन हाइट राइट. इट विल बी एन 90 डिग्री. ये जो परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ हो रहा है कहां पे इस बेस पे सो इट विल बी एन हाइट. इटू की हो जाबो আমার हाइट हो जाबो হয় না हाइट हो जाबो और इटू কি বুলি কম আমি বেস বুলি কম. যদি আমি ইটু বেস লও ইটু বেস হবো আর ইটু হাইট হয়ে যাব. কিন্তু যদি আমি ইটু if we will take a base as this one as a base then it will be this one will be the height. ইটু এটা কি হয়ে যাব যোনটো 90 ডিগ্রি ড্র হয়ে যাব which is perpendicular to this base. So the area of the parallelogram it will be base into height. ये जो base है आपका that one will be multiplied with the height. So we can simply write base into height. It will be the area of parallelogram. Okay. Next we will have the perimeter. ठीक है. perimeter क्या निकलेगा. Now when it comes to the perimeter of the parallelogram, see and 2 into sum of the adjacent side. क्यों लिख रहे हैं हम ये हम बता रहे हैं sum of adjacent sides. 2 into sum of adjacent sides. क्यों adjacent मतलब क्या है सर. adjacent माने होइसे मूल লগত जोने ठियो होय আছে ही. इसका एडजेसेंट साइड ये जो व्हाइट बोर्ड है इसका एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा ये हो जाएगा. सो इसका एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा इफ यू विल टेक द बेस एज दिस वन उसका एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा ये हो जाएगा. सो 2 into sum of the adjacent side will be the perimeter of a parallelogram. Okay. Next we will have the quadrilateral. ठीक है. quadrilateral में देखो आप लोग सिंपल है इट्स अ डायगोनल. এটুকু আমি কি বুলি কওঁ এটু আমি डायगोनल বুলি কওঁ হয় না. कैसे करके निकालेंगे हम लोग हाफ इंटू डायगोनल. ये जो डायगोनल है डायगोनल इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2. सो सिंपली वी विल राइट सम ऑफ ऑल साइड्स. ओके. सो दैट्स ऑल. टुडे वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट
chapter mensuration, which is from 8th standard, and the area of the square, which will be side square, and the perimeter will be 4 into side, as we had already discussed about it. And next we have the rectangle. So area of the rectangle will be L into B, as we also know that the perimeter of rectangle is equals to 2 into L plus B. And when it comes to the circle, सर्कल का जब हम लोग डिस्कस कर रहा होता है, दिस वन विल बी, वी नो दैट दिस इज अ रेडियस. ओके, सो व्हेन इट कम्स टू द एरिया, इट विल बी द पाई आर स्क्वायर. Okay, it will be the pi r square. And when it comes to the circumference, as I had already told you, circumference मतलब क्या होता है, the boundary line. So it will be the 2 into pi into r. And if pi was not given in the question, we can directly write 22 by 7, or if it was given in the question, we can write 3.14. Is that clear to all of you? Okay, so next we have the triangle. We also know that there are so many triangles are there. Okay, scalene triangle, isosceles triangle, right angle triangle. Anyways, so the area, to find out the area of the triangle, what we have to do, as we also know that it will be the height, because it is drawn perpendicular to the base. So that's why we will call it as a height, and this one will be the base. So area of the triangle will be half into base into height. Okay, half into base into height. And when it comes to the perimeter, see, as I had already told you, the perimeters are different sizes are there, isn't it, in different triangles. So what we have to do, we have to simply add all the sides, like sum of all the sides, and we get the value of, we will get the value of perimeter. Okay, next we will have the parallelogram. If we will draw a perpendicular to the base, it will be the area of the parallelogram will be base into height. When it comes to the perimeter, 2 into sum of all the sides. Like that only if we have quadrilateral. So area of the quadrilateral is equal to half into diagonal into height 1 plus height 2. And when it comes to the perimeter, we just have to add all the sides of the quadrilateral. So while I was writing, I just remember one thing, that we create so many issues by telling our stories to other. I just remember one thing while I was writing these things, these figures. कभी भी हम लोग हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, कब, जब हम लोग ज्यादा दूसरों को अपना बात शेयर करने लगता है. कीप योर माउथ शट. Mark my words, keep your mouth shut, because when you are supposed to share your things with others, this is the only reason why bad things happen to us, isn't it? कुछ अच्छा हो रहा है, no need to share. कुछ बुरा हो रहा है, keep your mouth shut. कुछ आप अच्छा कहीं कुछ जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, no need to tell to others. कहीं कुछ खराब भी हुआ है, no need to tell, no need to share. Okay, so while discussing it, it doesn't recover you. So what I'm trying to tell you is, no need to discuss it with others. Okay, keep it, make your circle small, so that it will be happy for you. Okay, the persons who were in your circle, it will be the selective one only. So no need to share each and everything to your friends, to your loved ones. No need to share your dreams, no need to share your aims. Okay, just be focused on your studies, be work on yourself. That's all for today. Thank you so much.